Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. This is the quiz, online quiz, first quiz of this session. तो ऑनलाइन क्विज है, एमसीक्यूज हैं कुछ क्वेश्चंस. आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना अपने आंसर्स. ऑप्शंस होंगे, ग्रामर क्विज है फॉर बिगिनर्स एज वेल एज फॉर एडवांस लर्नर्स. आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर ए बिगिनर और एडवांस लर्नर. सो एक फर्स्ट क्विज मैंने प्रिपेयर किया है और इसी तरह से क्विज आपको मिलते रहेंगे आगे भी. तो छोटा सा क्विज है, एमसीक्यू बेस्ड है. एक क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, ऑप्शंस होंगे 3. आपको करेक्ट ऑप्शन को कमेंट में नीचे चैट में लिखना है. What is the correct answer? So let's begin with the quiz. Article von Auto. What is the correct article von Auto? Auto means car. What do you think? What is the correct option? 1, 2 or 3? Der, die or das? Okay, आप अपना आंसर नीचे चैट में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं. So the correct answer is das. Das Auto. आई होप आप में से सभी का करेक्ट आंसर दास ही होगा, सभी ने आंसर को सही लिखा होगा. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. दास ऑटो. हियर यू हैव टू राइट द करेक्ट एडजेक्टिव एंडिंग altes, alten or alte. What do you think? What is the correct option? 1, 2 or 3? Take your time, write your correct answer in the chat. I am giving you 5 seconds time. उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा. So the correct answer is number 3, alte. Das alte Auto. जब भी डेयर डी और दास होता है, ओनली डेयर डी और दास एडजेक्टिव एंडिंग ई होती है. Das alte Auto, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट नंबर 3, ich fahre Berlin. What is the correct prepositions? Nach, zu or in? Ich fahre Berlin. Write your answer. The correct answer is nach. Ich fahre nach Berlin. If you remember, जब भी कोई प्लेस, सिटी या कंट्री की हम बात करते हैं, we are going to a particular place, we are traveling, we are driving. Preposition is nach. To. I am traveling to Berlin. I am going to Berlin. I am driving to Berlin. Next question, number 4. Kommt, Indian. What is the correct preposition? Write in the chat. Von, aus or in. ये तो आई थिंक 100% सभी का सही होना चाहिए, बिकॉज ये आपने A1 में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्लासेस में ही पढ़ लिया होगा. करेक्ट आंसर इज aus. Kommt aus Indien. He comes from India. Kommt aus Indien. Next question, number 4. Nach Indien. Nach Indien. Here you have to write the correct conjugation of the verb fahren. What is the correct answer? Write in the chat 1, 2 or 3. Fährt. Exactly. Fährt nach Indien. Third person, fährt. Option 2. Next, number 5. Lisa nach Hause. Again, you have to write the correct conjugation of the verb gehen. Gehen की correct conjugation क्या होगी Lisa के साथ? Lisa is the third person. So write your answer in the chat. First, second or third option. The correct answer is option 2, geht. Lisa geht nach Hause. Lisa घर जा रही है. Lisa is going home. Next question, die Frau bei BMW. Die Frau bei BMW. Again, here you have to write the correct conjugation of the verb arbeiten. अपना आंसर नीचे चैट में लिखो. करेक्ट conjugation क्या होगा? Option 1, 2 or 3. So the correct answer is option 3. Die Frau arbeitet bei BMW. Die Frau arbeitet. Die Frau is the third person. Z, small z. The woman is working with BMW. Arbeitet. Third option, arbeitet. Next question, number 7. Ist Ihre Handynummer. Ist Ihre Handynummer. Here you have to write the correct W-Frage. W family words आपको fill करना है. Correct option 1, 2 or 3. Wie, wo or was. Write your answer in the chat. And the correct answer is wie. Wie ist Ihre Handynummer. If you remember, if you have seen my previous videos, I always say whenever we talk about handynummer, telephone number, email address,
we always use we. Was is wrong. We do not say what is your mobile number. In German, it's like how is your mobile number. So the correct answer is we. Next question, bist du, Anton. यहाँ भी आपको W family लिखना है. Correct answer 1, 2 और 3. We, where और was. अपना आंसर आप चैट में लिखिए. The correct answer is where. Option 2. Where bist du? Who are you? Answer Anton. Next, number 9. Wir fahren mit Taxi. Wir fahren mit Taxi. What is the correct article? Der, das or dem? Der, das, dem. Write your answer in the chat. And the correct answer is dem. Wir fahren mit dem Taxi. You know that mit is dative preposition, therefore dem. Option 3. Wir fahren mit dem Taxi. We travel, we drive by taxi. We are going by taxi. And the last question, geht Frau Meier. Here you also write correct W family 1, 2 or 3. What is the correct answer? Wohin, wo or woher? Write your answer in the chat. Correct answer. And the answer is option 1, wohin. Wohin geht Frau Meier. Where Frau Meier is going. Frau Meier कहाँ जा रही हैं? जब भी हम कहीं जाते हैं, जाने के लिए gehen है, fahren है, reisen है, we use the W family wohin. Wohin we use when we go in a particular direction. Wohin geht Frau Meier. So that's all in this quiz, 1 to 10 question. I hope you liked it. So please hit the like button and subscribe the channel to get more such kind of quiz I'll bring for you. So thank you for watching. Bye bye. Take care.